Hey, hello guys. So welcome to this video. In this video, we are going to talk about your storage account in Azure. Okay. So हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट स्टोरेज अकाउंट क्या होता है, कैसे ये डिफर करता है थोड़ा AWS से, राइट, और कैसे आप उसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट बनते हैं Azure के अंदर ना। Azure स्टोरेज अकाउंट बनता है जिसमें काफी सारी सर्विसेज आप यूज कर सकते हो। जैसे S3 का ऑप्शन था, तो यहाँ पे Azure के ब्लॉब्स होते हैं, टेबल्स आप यूज बना सकते हो, आप EFS भी बना सकते हो स्टोरेज अकाउंट के अंदर, तो वो सपोर्ट करता है। तो स्टोरेज अकाउंट जो है वो मल्टीपल ऑप्शन सपोर्ट करता है। फिर हाई अवेलेबिलिटी भी सपोर्ट करता है, अगर आप हाई अवेलेबिलिटी बनाना चाहते हो तो वो भी सपोर्ट करता है। तो तो थोड़ा सा हल्का सा माइनर डिफरेंट कंसेप्ट है कि यहाँ पे आपको पहले स्टोरेज अकाउंट बनाना होगा और उसके अंदर आप चीजें बना सकते हो, या बेसिकली आपको एक स्टोरेज अकाउंट चाहिए होता है सर्विसेज को यूज करने के लिए। ठीक है, तो स्टोरेज के ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या स्टोरेज के ऑप्शंस हैं। सो फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग, I just would like to share this thing like what are storage in available in Microsoft Azure. So you have Azure blobs. तो blobs यहाँ पे similar to S3 है। जैसे आप बकेट वहाँ पे क्रिएट करते हो, यहाँ पे भी आप क्रिएट कर सकते हो, बट यहाँ पे उसको ब्लॉब बोलते हैं। ठीक है, अगेन यूज टू एक्सेस एप्लीकेशन डेटा फ्रॉम एनीवेयर, कहीं भी आप डेटा स्टोर कर सकते हो, फाइल्स अपडेट कर सकते हो। यू कैन एक्सेस योर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सिमिलर टू S3 सर्विस इन AWS एंड क्लाउड स्टोरेज सर्विस इन GCP। सो वहाँ पे आप बकेट क्रिएट करते हो एंड क्लाउड स्टोरेज सर्विस बोलते हैं वहाँ। देन एज्योर फाइल्स अगर आप बात करते हो तो आपने AWS में मैंने कई बार बताया, जैसे EFS होता है ना, इलास्टिक फाइल सिस्टम। तो अगर आप एज्योर में ऐसी कोई सर्विस देख रहे हो तो वो आपको मिलेगी एज्योर फाइल्स। एज्योर फाइल्स में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको एज्योर फाइल्स का ऑप्शन मिल जाएगा, और GCP में जाते हो तो उसको बोलते हैं फाइल स्टोर। ठीक है, तो S3 हो गया, आपका EFS हो गया। अब ये कौन सी स्टोरेज बचती है? डिस्क, है ना, जो सर्वर की डिस्क होती है। तो सर्वर की डिस्क के लिए आप यूज करते हो यहाँ पे एज्योर डिस्क। तो अगर आप एज्योर डिस्क यूज कर रहे हो तो दैट मीन्स यू आर रेफरिंग EBS सर्विस, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर सर्विस इन AWS एंड परसिस्टेंट डिस्क इन GCP। तो ये सेम है। ठीक है, तो ये आपकी तीन मेजर स्टोरेज क्लासेस है जो आप यूज करते हो नॉर्मली, राइट। देन उसके बाद एज्योर सर्विस बस भी अवेलेबल है। तो सर्विस बस का मतलब है यहाँ पे SQS सर्विस, जो आप SQS सर्विस को यूज करते थे क्यू बनाने के लिए, क्यू स्टोर के लिए, वो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो एज ए सर्विस बस। ठीक है, और एज्योर टेबल्स हैं, दे आर क्लोज टू DynamoDB, एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, बट ये आपके पास एक और ऑप्शन है। अगर आप DynamoDB जो स्टोरेज के लिए यूज करते थे, यहाँ पे अगर उसका कोई नियर बाई ऑप्शन देख रहे हो तो यू कैन गो फॉर एज्योर टेबल्स। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी आपको। कुछ आपका डाउट है, कुछ क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर ये समझ में आ गया तो वी आर गुड, और आप मुझको जस्ट कंफर्म कर सकते हो कि यस यू लाइक दिस एंड आपको अंडरस्टैंड हो गया। नाउ इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देयर आर कुछ रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स हैं विच यू कैन यूज एक्चुअली, एंड आई कैन शो यू लाइक हाउ यू कैन क्रिएट अ स्टोरेज अकाउंट। ओके, सो दिस लिंक, इफ यू गो हेयर, सो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। मैंने एक आपके पास ऑप्शन बना था जैसे क्रिएट स्टोरेज अकाउंट का, ये लिंक है। तो ये मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको यूज कर सकते हो चेक करने के लिए। इसमें सारी कमांड्स हैं, लाइक डॉक्यूमेंटेशन देखोगे तो अभी डॉक्यूमेंटेशन ना काफी अच्छी हो गई है, क्योंकि AWS ने काफी अच्छा किया था। तो इस वजह से मुझे लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने भी ये काफी अप्लाई किया है और डॉक्यूमेंटेशन पे काफी काम किया है। तो नाउ दे हैव सम गुड डॉक्यूमेंटेशन। तो अभी कंपटीशन चल रहा है इसी तरीके का, और एज्योर भी अच्छा मार्केट में है, राइट। तो पोर्टल में जाते हो तो यहाँ पे आपको स्टेप्स सारे मिल जाएंगे, क्या क्या स्टेप्स हैं, तो यू कैन रेफर दिस डॉक्यूमेंट। अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें, बट पावर शेल की कमांड अगर आपको नोट करनी हो तो वो इंटरेस्टिंग है, वो आप यहाँ से रेफर कर सकते हो कि पावर शेल में क्या कमांड रन करनी है ना, तो वो आपको क्लियर हो जाएगी यहाँ से, राइट। तो ये इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगा कि आप मतलब इजीली इसको अप्रोच कर सकते हो पावर शेल की कमांड को। एज्योर CLI में कैसे क्रिएट करना है तो वो भी आपको कि एजी लॉगिन करो, और स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि पहले आप एक
ग्रुप क्रिएट कर लो, ठीक है। देन सारा स्टेप बाय स्टेप मतलब आपको सारी आपको कमांड्स मिल जाएंगी, तो दैट यू कैन आल्सो रेफर। अभी चलते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं आपके पास आ जाता हूँ डायरेक्ट अकाउंट पर कि कैसे बना सकते हैं। तो आपने पोर्टल पे लॉगिन किया, ठीक है। ये मैंने एक नया अकाउंट बनाया था, देखो तो ये मेरा है यहाँ पे एक्टिव, एंड आई वांट कि मतलब इस अकाउंट के थ्रू जितने भी हम वीडियोस में आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ वो कर दूँ। तो यहाँ पे आप गए, यहाँ पे जाने के बाद आप क्रिएट ए रिसोर्स पे क्लिक करोगे, या फिर आपको नियर बाय जैसे स्टोरेज अकाउंट मिल रहा है तो आप कर सकते हो। एसक्यूएल डेटाबेस आपको क्रिएट करना है, सिंपली क्रिएट कर सकते हो। कॉस्मोस डीबी करना है तो ये कर सकते हो। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको यहीं मिल जाते हैं, और अगर आप क्रिएट ए रिसोर्स पे भी क्लिक करोगे तो भी मिल जाएगा। तो मैं आपके पास क्लिक करता हूँ यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट पर, क्योंकि हमें स्टोरेज अकाउंट बनाना है। देन इसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि अभी क्या है कि कोई भी स्टोरेज अकाउंट बना हुआ नहीं है मेरे पास, है ना। तो अब सपोज करो मैं एज्योर डिस्क बनाऊंगा या एज्योर ब्लॉक बनाऊंगा, तो मुझको एक स्टोरेज अकाउंट चाहिए होगा, तो ये स्टोरेज अकाउंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी मेरे पास कोई भी नहीं है तो मैं नहीं बना पाऊंगा, तो मुझे स्टोरेज अकाउंट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, क्लिक ऑन क्रिएट स्टोरेज अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं क्रिएट करता हूँ तो देखो यहाँ पे आपके पास आ जाता है कि क्या सब्सक्रिप्शन है, क्या आपके पास है। तो अभी मेरा जो सब्सक्रिप्शन है वो फ्री ट्रायल है, ठीक है। तो एज्योर में जैसे आपको पता है कि नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन होते हैं, जो आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपका बिलिंग लग जाएगी। बेसिकली ये बिलिंग अकाउंट हुआ एक तरह से, और उस बिलिंग अकाउंट का या उस सब्सक्रिप्शन का आपको चार्ज पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखते हैं कि किस सब्सक्रिप्शन में आपकी बिलिंग जाएगी। तो अभी मेरी फ्री ट्रायल में जा रही है, दैट मीन्स कि मुझे पे नहीं करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको अराउंड आपको कॉस्ट जो पड़ेगा ना वो पड़ जाएगा। सो यहाँ पर आप जाओगे और क्रिएट में आ गए, हाँ। तो फ्री ट्रायल पे आप आ गए, उसके बाद अभी रिसोर्स ग्रुप नहीं है तो रिसोर्स ग्रुप आपको एक बनाना पड़ेगा। तो रिसोर्स ग्रुप क्या है अगेन, कि जैसे हम लोग पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि रिसोर्स ग्रुप क्या होता है, कि एक आपका रिसोर्स ग्रुप बन गया एक पर्टिकुलर रीजन में, तो अभी सारे के सारे रिसोर्स जो बनेंगे उसी रीजन में जाएंगे और उसी रिसोर्स ग्रुप के अंदर जाएंगे, ठीक है। और दूसरा फायदा क्या है कि अब आपको मान लो वो रिसोर्सेज डिलीट करने, तो आप जस्ट रिसोर्स ग्रुप डिलीट करोगे तो वो सारे रिसोर्सेज आपके आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि इस रिसोर्स ग्रुप में मेरे क्या क्या रिसोर्सेज हैं, तो वो आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो सपोज करो मैं इसी के लिए एक रिसोर्स ग्रुप बना देता हूँ, तो क्लाउड लर्निंग प्राइमरी बना देता हूँ, ठीक है। ओके किया मैंने, तो ये मेरा एक रिसोर्स ग्रुप बन गया जो मेरा प्राइमरी रिसोर्स ग्रुप है, ठीक है। तो अभी मेरे जितने भी प्राइमरी रिसोर्स हैं, कहने का मतलब वो इसके अंदर बनेंगे। अभी एक डीआर बनानी तो मैं बना दूंगा क्लाउड लर्निंग डीआर रिसोर्स ग्रुप। तो अब मुझे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि भाई डीआर के कौन से रिसोर्सेज हैं और प्राइमरी के कौन से रिसोर्सेज हैं, ऐसा मुझे क्लियर हो जाएगा। तो ये एक फायदा है, मैं कोई भी रिसोर्स बनाऊंगा तो मुझे वो रिसोर्स ग्रुप के अंदर बनाने ही पड़ते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आ गया आपका इंस्टांस डिटेल, मतलब जो स्टोरेज अकाउंट है उसको क्या बना रहे हो। तो मैं बोलता हूँ अगेन इसको भी नाम मैं क्लाउड स्टोरेज प्राइमरी ही कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो इसने बोला कि कैरेक्टर ज्यादा हो गए हैं तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर सकता हूँ। अच्छा, लोअर कैरेक्टर का मुझे देखना पड़ेगा, तो क्लाउड स्टोरेज और प्राइमरी का भी मैं लो कर देता हूँ, ठीक है। तो क्लाउड स्टोरेज प्राइमरी के नाम से बना दिया। अब देखो किस रीजन के अंदर बना रहा हूँ, तो अब देख रहे हो रीजन कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं रिसोर्स ग्रुप को मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। तो अभी सपोज करो मैं इसको बना देता हूँ इंडिया में ही बनाता हूँ, ठीक है। तो इंडिया में मैं बना देता हूँ नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया मिल जाएगा आपको। तो सेंट्रल इंडिया वी कैन चेक, ओके इंडिया में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं अभी राइट नाउ। हाँ इंडिया इंडिया सी सेंट्रल इंडिया आपको मिल गया, ठीक है। तो ये रिकमेंडेड है और मैं यहाँ पे आ गया। उसके बाद परफॉर्मेंस आपको कैसी चाहिए, डिस्क की स्टोरेज की जो परफॉर्मेंस है वो कैसे, डिटरमाइन वेदर यू वांट टू हैव प्रीमियम परफॉर्मेंस और नॉर्मल स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, ठीक है। तो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस अगर आपके नॉन क्रिटिकल ऑप्शंस एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, तो यू शुड गो फॉर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड
परफॉर्मेंस, राइट। अगर आपको लो लेटेंसी बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो आपको फिर प्रीमियम स्टोरेज पे आप जा सकते हो, जहाँ पे आपकी स्पीड जो है वो डेफिनेटली काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। प्रीमियम एसएसडी यूज़ होती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ बढ़ जाती है, ठीक है। देन रेप्लिकेशन, ये आप कह सकते हो रिडंडेंसी कितनी चाहिए, है ना। मतलब आप कितना डेटा लॉस बियर कर सकते हो, या आपको लिए डेटा रेप्लिकेशन या डेटा अवेलेबिलिटी कितनी क्रिटिकल है। तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो क्या क्या ऑप्शन हैं? लोकली रिडंडेंट स्टोरेज, लोकली रिडंडेंट स्टोरेज, इसमें क्या है? इसमें है कि आपका जो रेप्लिकेशन नहीं है, ठीक है, लोएस्ट है ये कॉस्ट ऑप्शन विद बेसिक प्रोटेक्शन। नॉर्मल प्रोटेक्शन मिलता है आपको सर्वर रैक का और ड्राइव फेलियर का, ठीक है। रिकमेंडेड फॉर नॉन क्रिटिकल सिनारियो, मतलब हाई अवेलेबिलिटी कुछ नहीं है, अगर फेल हो गई तो दूसरे रीजन में नहीं जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। सो these are four type of redundancy storage available, which is basically for your availability. Okay, so this is a locally redundant storage which is lowest with the basic protection for your server rack and drive failures. Okay, this is recommended for non-critical scenario. Now better than this is geo redundant. Geo redundant is GRS. What it will do, it will provide you the option of secondary region. So suppose there you have storage in one region, you will get failover for other region as well. So this way it is good for backup scenarios, right? Like if you want to keep backup, so it should be in some other region where you can, which is far away, so that if there is some issue with one data centers, you can say, or one region, your data will be available in another region too. Okay, now third one is zone redundant storage. Zone redundant storage means uh, every region can have availability zone as well. Okay, so like in AWS you have seen, right, like for one region there is multiple availability zone, at least 2 availability zone used to be there. Now Azure as of now don't have all regions don't have uh, all regions don't have the availability zone, but if it is there then it is at least 3 availability zone they are supporting, right? So this is how they are working. So they have the dependency, like you can have the storage in another region as a in geo redundant, but if you have zone redundant storage, that means in one region itself you can have multiple availability zone. Okay, which will be failure, which will be provide you failure against data center failure. Okay, so if some data center goes fail, you can have your resources in another availability zone as well, and this way you can ensure high availability, right? So there will be no delay. Basically, if you say, there will be no delay because high availability is achieved there, right? In local there is no high availability, it is only one region and one resource only available. So if some issue with this region, then it will go to backup region, and which is actually not good, right? In geo redundant, basically it will go for second reason, but there will be latency, right? But in JRS, if you go, so it will be like high availability will be available at the same time because uh, they are into same availability zone, same region, right? So multiple availability zone or multiple data centers are available into one region itself. Now, this is the most costly one, right? Geo redundant. So geo redundant is basically region based replication as well, right? Region also available, right? If one region got fail, another region will be available, and they also provide the high availability by JRS, right? So it will have multiple. So this is the best solution, and obviously the costing will become high for this. So you can choose as per your requirement, but it is optimal data protection solution that include the offering of both GRS as well as GZRS, right? So both are available. So for critical data solution, you can go for this. I hope you got that scenario. If you have any question, feel free to ask. Then you can click on next, right?
Now in the advanced options, so I don't want to make this video very long, but let me just try to complete the topics. So in the advanced, you can set up your security settings that impact your storage account. So if you want secure transfer for REST API operation, you can click on this option. If you want enable public access for your blob like S3 bucket, or you want public access, you need to enable this one. Otherwise, by default, it will be blob. Enable storage account key access if you want to set up the encryption, right? So if you want, you can enable this one. And default to Azure as Active Directory authorization in the Azure portal. So if you have AD directory and AD integration, you can set up it with this. So right now it is no by default. Minimum TLS version you can define. So right now we have defined with 1.2. If you want to integrate it with data lake generation also, so you can support that as well. Blob storage, enable SFTP. Right now it is in preview mode. Uh, so you need to enable hierarchical namespace if you want for data lake, and if you want blob storage to use SFTP, right? You need to enable this option, then only this option will be enabled. Then enable network file system NFS if you want to enable for data lake. Okay, you can use this one. Cross tenant application if you want, so that is also you can enable. So that is some options are available for blob. Okay, for data lake also you can enable. Azure file, right? Azure file like EFS system if you want large file share, so that is also possible, right? Then when we are talking about large file share, so read this. Provide file share support up to maximum 100 terabyte. Large file share storage accounts do not have the ability to convert the geo redundant storage offering. Okay, so they will don't have geo redundant storage offering, and upgrade is permanent. So this is you need to take care of this. Okay, so these are the some options which you can think like if you need, so you can apply into storage account. Storage is account is nothing, it's just a storage, right? Used for blob, Azure and data lake files, right? Like that. Now click on the next networking part, so you can define like which network it will use. So right now that enable public access from all network, if you want to enable, this will be there, right? Enable public access from selected virtual network. If you want to specify for few virtual networks, you can do that as well, right? So it is basically for publicly available from internet as well. If you want only for few particular network, you can specify, and then you have to define the network range as well, right? So here you can select which virtual network you will, or otherwise you can create your own virtual network as well, right? So this is by default like 10 series range network you can create, or you can create your own as well, right? So you can specify the range and then you can create. Right now I'm just leaving it. Okay, so I'm just leaving it here itself, and we are not using any virtual network as of now, but if you want you can do that, right? So I hope this is also clear till now. If you have any question, feel free to ask me. Now, what is network routing? So how you want to set up the network routing you can decide, right? So by default Microsoft network routing is recommended for most of the points, right? Most of the customers. Data protection, if you are talking about like how you can set up data protection, so they have recovery option as well in storage account. So you can do point in time restore for containers. This is option available. So if you are using containers, you can use this option, right? Point in time, but depend upon like what is your criticality. Okay, obviously there is some extra costing would be there, but yes, and it will use basically versioning, right? So obviously the versioning cost will come into picture, and definitely blob soft delete will also come into picture. That means more storage and more price you need to pay. Enable soft delete for blob, so this is like data protection. You can ensure like whenever you are doing some deletion, it go for soft deletion so that you can restore it if required.
and it would be there for 7 days. Soft deletion for containers also available. Soft delete for file share also available. Okay, so this is also available, and you can specify the days as per your requirement. Now encryption. So again, like AWS used to provide their default AWS keys, right? Similar here, encryption type. So all cloud, used to be same, right? Almost. So encryption type, it is again like you can use Microsoft managed key. There used to be AWS managed key, right? Then customer managed keys. If you want to use your own key as well, you can use that one, right? So if you have some, you can create your custom managed key, and you can utilize that one. Okay. So this is possible. Then enable support for customer managed key. You can enable, right? For blob and files for all services, you can choose as per your requirement. Then you can set up your infra encryption as well if you need. So you can do that if you require. Next, you can add some tags here, right? So you can add some tag like owner, say Prashant, all resources, right? For all resources, it will be contact number. You can specify some contact number, location, etc. You can do, right? So like this you can do, and you can create your things. Now your storage account is almost ready. Free trial, under free trial, it is covering, and all such options you which we discussed have come there. And here your storage account will get create. So this is doing final validation as of now. Validation pass, so we are good to create the account. And this is Cloud Learning Primary Resource Group, and the storage account name is also Cloud Storage Primary. Cloud Learning Primary should be there, but okay. Now I think it is more relevant. Cloud Storage Primary. Performance standard. I choose read access geo redundant storage GRS only. Supporting TLS version 2 and the other options, right? Which we have discussed about cloud, about storage account. So I hope here this video was useful for you. आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से चीजें जो ऑप्शंस मैंने बताया. अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो यू कैन आस्क, and I will be happy to answer your queries. Right? Sorry, in the flow, I think I gone from in English itself. Maybe like I try to use Hindi sometimes, most of the times normally, but कभी कभी flow में निकल जाता है. So I think, but it is my Hindi or English is almost like same, easy to understand probably. You can share your feedback into comments or interface section, right? So here it is, your account, storage account got ready. And in the future videos, we will use all these things. So storage account, I try to make more concepts more clear. If you understand well, please let me know. If you didn't understand well, that is also fine. You can tell me, right? So I will try to keep providing the better and better and information in better way. So thank you, and you can share it with your friends as well, so that they can also have knowledge about this. So this is all done there, and this is our deployment has been done. And if you go to your storage account now, it would be available. So now if I click on the storage account, you can see my primary storage account is available. So thank you guys for watching this video, and in the next video we will try to cover the other points. But here you can see all the options related to this would be available, and you can modify as per your requirement, right? So all such things, and Microsoft is doing good job these days. Lot of easier interface they are providing. So it is really nice to work with this. Okay guys, thank you. Bye bye.